अस्सलाम वालेकुम। हम 73rd सेशन में हैं एंड वी आर लुकिंग एट चैप्टर नंबर 15। उसके आखिरी पोर्शन में हैं हम। छोटा ही सेशन होगा बिकॉज नॉट मच इज लेफ्ट इन दिस लेक्चर अनलेस वंस अगेन कहीं पे मुझे लगेगा देयर इज समथिंग टू टॉक अबाउट, तो विल टॉक अबाउट दैट इंशाल्लाह. So where are we? We are in the post Uhud part of the Prophet's life sallallahu alaihi wasallam. तो अभी अभी क्या हुआ है? We looked at the battle of Uhud and the Muslims have lost the battle. तो वो है मामला जहाँ पे हम अभी खड़े हुए हैं. And what happens immediately after that? We'll look at that now. ठीक है. लेज़ी हेज़ल्टन कहती हैं कि it was at this point that the Prophet looked at adjacent tribes for kind of cementing, strengthening जो एलाइज वगैरह हैं उनके साथ मामलात को स्ट्रेंथन करना है और नए एलाइज ढूंढना एंड डूइंग दोज थिंग्स, स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाना. हम इन चीज़ों को फिर से ऐसे नहीं देखते हैं. हम इसको कहेंगे कि फिर से दावत का सिलसिला चल रहा है, दीन के मामले में दावत का सिलसिला चल रहा है, इनवाइटिंग पीपल टू एक्सेप्ट इस्लाम आउटसाइड मदीना. एंड अदर्स कैन लुक एट इट कि वो अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं हमारे लिए. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी मैसेज लेकर आ रहे थे उसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं. एंड मक्का इज़ ऑल्सो लुकिंग एट vying these people vying for support. तो दोनों कंपीटिंग पावर्स हैं अब. और जो बचा क्या, अब देखो हिजाज के बाहर बचा नजद वाले खत्ते में बेडोइन्स ज़्यादा रहते थे, तो दे आर लुकिंग एट बेडोइन्स नाउ कि उनका सपोर्ट किसकी साइड ज़्यादा जाएगा. एंड the Bedouin chiefs, they are also very intelligent and they are very shrewd, they are very clever, and they are very cautious, and they are trying to get the best deal out of the two from their side. And इसमें this Leslie Hazelton says is a very dangerous game. Why? Because इसके अपने कुछ ये हैं मामलात जो इसकी वजह से ओपन होंगे. ये बेडोइन ट्राइब्स के अंदर के फिशर्स को भी ओपन कर रहा है ये मामला. हाउ? एंड शी मेक्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. देखिए, एवरीथिंग दैट अपीयर्स लाइक अ मोनोलिथ डज नॉट हैव टू बी सो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट. अक्सर जैसे मुस्लिम्स, ये नाम से ऐसे लगता है कि एज इफ वी आर ए मोनोलिथ. देयर आर मेनी थिंग्स अमंग अस जिन पे हम कॉमन हैं, मुत्तफिक हैं, लेकिन एक मोनोलिथ नहीं है मुस्लिम सिविलाइजेशन पार्ट्स की बनी हुई है. देयर इज़ अ कश्मीरी इस्लाम, देयर इज़ अ से पंजाबी इस्लाम, देयर इज़ अ सिंधी इस्लाम, देयर इज़ a Lucknowi Islam, there is an Indonesian Islam, an Arab Islam, a Persian Islam. ये बड़े सारे लोगों के लिए ये नई बातें हैं कि ये कौन सा इस्लाम नेशनैलिटी को नहीं मानता, इस्लाम इज़ इस्लाम. लेकिन दैट इज़ वेरी रिडक्शनिस्ट व्यू ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. वी आर नॉट अ मोनोलिथ. हम फ़ैरन पहनते हैं. आप अरब मुस्लिम्स को फ़ैरन पहनते नहीं देखोगे, लेकिन उसूल दोनों फॉलो कर रहे हैं हिजाब के. अब आप मेरे पॉइंट को समझिए कि बोथ आर यूनानिमस इन व्हाट and united in what? Following the rules of hijab. But how would that translate? How would that Islam translate in action is different. And because of which there is an emergence of what? A Kashmiri Islam. जैसे हम यखनी खाते हैं, हम रिश्ता खाते हैं, ये हलाल है, हलाल के रूल्स फॉलो करता है. फ्रेंच इस्लाम भी हलाल के रूल्स फॉलो करेगा, लेकिन आप वहाँ रिश्ता और रोगन जोश नहीं देखोगे, वो यहीं पे मिलेगा. दैट्स हाउ फ्रेंच इस्लाम इज बॉर्न. तो वी आर नॉट ए मोनोलिथ. अब जब कंपीटिंग फोर्सेस हमसे बात करने की कोशिश करेगी तो ये फिशर्स शायद ओपन होंगे. फॉर एग्जांपल, समवन इज सेलिंग हीटिंग इक्विपमेंट, तो उसके बेहतर एलाइज से कश्मीरी मुस्लिम्स ही बनेंगे एज कंपेयर टू अरब मुस्लिम्स. क्यों?
क्योंकि हम आपस में इस मामले में मुत्तफिक नहीं हैं। उनको चाहिए ही नहीं हीटिंग इक्विपमेंट, ये तो कश्मीरी मुस्लिम्स को चाहिए। अब कूलिंग इक्विपमेंट आप दे रहे हैं, से फॉर एग्जांपल ग्रीनलैंड में अगर कोई मुस्लिम्स रह रहे हैं या साइबेरिया में अगर आप मुस्लिम्स कुछ रह रहे हैं, उनको उनको नहीं चाहिए, दे हैव नो नीड फॉर दैट। तो competing forces, when they would talk to you and you have fissures inside your society. Acha, there is one more point we can extend here, since we are talking about divisions within Muslim world. These divisions are not bad. ये बड़े रिडक्शनिस्ट लोग होते हैं जो यूनिटी को यूनिफॉर्मिटी समझते हैं और इस वजह से कभी उसको अचीव ही नहीं कर पाते। देखो, यूनिटी हमारे हाथ की उंगलियों में भी है, तभी तो हम बर्तन उठा पाते हैं, बॉलिंग कर पाते हैं, बैडमिंटन खेल पाते हैं, पेंसिल को हाथ में पकड़ के कितनी नाजुकता से अपने हाथ को हम चलाते हैं। कभी देखिएगा, कभी लुक एट योर हैंड एज इट मूव्स व्हेन यू आर राइटिंग, कितनी लचक होती है उन फिंगर्स में जो अदरवाइज ऑब्ट्यूस लगती है, बट अमेजिंग हाउ द फिंगर्स मूव व्हेन वी आर राइटिंग। तो लेकिन दैट डजंट मीन माई फोर फिंगर इज माई थंब, my middle finger is my little finger. No, my right hand is not my left hand, my left hand is not my right hand. They are different hands, there are different fingers that work together to make the hand. तो differences necessarily bad नहीं होती. There are a lot of people who dwell on differences, जैसे Hindu Muslim, Christian Muslim या Jews Muslim. The differences, variety is the taste of life. ये दुनिया में ऐसे ही चला है हमेशा, और हम भी बड़े डिफरेंट है। एवरी मुस्लिम इज यूनिक, एवरी हिंदू इज यूनिक, एवरी क्रिश्चियन इज यूनिक। द प्रॉब्लम पर से इज नॉट डिफरेंसेस, द प्रॉब्लम इज हाउ वुड द थंब बिहेव इन फ्रंट ऑफ द फोर फिंगर। दे हैव टू वर्क इन टैंडम. That's something that needs to be understood, that we are united on certain things but we are different as well, and that's what gives scope for self expression. Understand it at a very very individual level. एक शख्स के पर्सपेक्टिव से इसको देखे, जैसे मैं हूँ, प्रज्वल है, अकील है, देयर आर अदर पीपल एज वेल, समन है, नाजमा है। हम सब अगर सिर्फ अपनी सुपरा आइडेंटिटी के सामने सर झुकाएं तो हमारी इंडिविजुअलिटी कहाँ गई तब? ये तो एक टोटलिटेरियन सिस्टम बन गया जिसके सामने सर तस्लीम खम करके हमें हमारे रूह, हमारे नफ्स, हमारी ख्वाहिशात, हमारे खुद की वजूद को फना करना पड़ेगा। जबकि इसका दूसरा पार्ट, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है कि हम अल्लाह ताला की रजामंदी के सामने अपने सर को झुकाते हैं, जिसको आप सबमिशन कहेंगे, दैट इज़ ऑब्वियसली फाइन। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वी बर्डन नो वन मोर देन इट कैन बेयर। दैट मीन्स वी आर डिफरेंट, आवर एक्सप्रेशन ऑफ फेथ वुड ऑल्सो बी डिफरेंट. How we would express our faith would be different. How would we behave in that faith would be different. Everyone is not going to have the same amount and same expression of faith. We would differ in when we cry. We would differ in which things matter to us. There are people who would cry on a particular matter. Others won't cry on that matter. There are things that would make you laugh. Others would not laugh at it. ये self expression की जगह necessary है. Otherwise we would suffocate. And we have turned our religions, and most of the people have turned their religions into two extremes. Either they are too much suffocating or they are too free to remain religions at all. कि आप कुछ भी कर लो रिलीजन के नाम पे, और दूसरे हैं जो कुछ भी नहीं करने देते. The truth is somewhere in the middle. It is like a rope. Religion is like a rope which is tied to your feet, and the rope is very long. And you can roam freely till the rope allows. After that, जिसको हुदूद कहेंगे, इस हुदूद से आगे नहीं जाना है. जैसे फॉर एग्जांपल, हैव तैयब फूड, इग्नोर द खबाइस. अब नहीं नेसेसरी है मुझे ये खाना है ना, ये एक्सट्रीम को अवॉइड करे. हमारे खुद के एक्सप्रेशन की गुंजाइश है. देयर आर पीपल हु लव वेजिटेरियन फूड. ना मुस्लिम है तो नॉन वेज खाना है, नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है नॉन वेज खाना है. जिसको खाना है खा ले, जिसको नहीं खाना नहीं खा ले. ये है पर्सनल एक्सप्रेशन की गुंजाइश दीन में. और ये कब
मुमकिन हो पाती है जब हम इन डिविजन्स को एक्सेप्ट करें, नॉट एज समथिंग दैट डिवाइड्स अस बट दैट समथिंग विच मेक्स दिस मोज़ेक ब्यूटीफुल। एक ही कलर होगा पूरे घर में, ये तो कोठरी जैसी लगेगी, बड़ा बोरिंग हो जाएगा घर। इसमें कर्टेन पे एम्ब्रॉयडरी होनी चाहिए, एम्ब्रॉयडरी में 10 कलर होने चाहिए। ये एक बगीचा है, ये डिफरेंट फूल से बनता है, इसमें गुलाब भी होना चाहिए, इसमें सनफ्लावर होना चाहिए, इसमें ये सारे फूल होने चाहिए, तब जाके ये खूबसूरत लगेगा। ये कालीन है, एक इस कालीन में डिफरेंट डिज़ाइन होंगे, डिफरेंट मोटिव्स होंगे, डिफरेंट एक्सप्रेशंस होंगे डिफरेंट चीज़ों के। हम कपड़े डिफरेंट मौसमों में डिफरेंट, कुदरत डिफरेंट रंग पहनती है डिफरेंट मौसमों में। अभी आएगा कश्मीर में, अभी समर चल रहे, एवरीथिंग इज़ लश ग्रीन, व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट। एंड अभी कुछ टाइम बीत जाएगा एंड प्लांट्स वुड स्टार्ट शेडिंग देयर लीव्स, कश्मीर वुड बी ब्राउन, रेड, येलो, एंड वो भी खूबसूरत है। That is its own beauty. And then there would be winter, and there would be no leaves anywhere. There would be, the air would be, बहुत ठंड होगी, हमारे लिबास बदलेंगे, मोटे मोटे कपड़े होंगे। जिन सीट्स पे 4 बंदे बैठते हैं उन सीट्स पे 3 बैठेंगे सोमो में। ये अपना लिबास पहनेगी कुदरत। विंटर में फिर से स्प्रिंग आएगा, नए फूल होंगे, लोगों को ज़ुकाम होगा क्योंकि उनको पोलन से एलर्जी होगी, वो भी अपना एक टाइम है। तो कुदरत को ज़बरदस्ती हम बनाएंगे नहीं, देयर शुड ऑलवेज बी समर, ये ऐसा नहीं है। सो देयर डिफरेंसेस वुड रिमेन, डिफरेंसेस आर नॉट अगली, व्हाट यू डू विद दीज डिफरेंसेस इज व्हाट मेक्स देम अगली। Men and women are not same, they are different, but now what do you do with these differences? That's what makes a relationship ugly. That नहीं मैं तो मर्द हूँ, मैं तो औरत पे जुल्म करूँगा, या औरत बोलेगी नहीं मैं तो औरत हूँ, मुझे इसको सबक सिखाना है, 30,000 साल से वो मर्द जुल्म कर रहे हैं। That's what would make a relationship ugly. जब दोनों तस्लीम करेंगे कि हम दोनों यूनिक है, हमारे expressions of love, expressions of care, they are different, then there is hope for getting along together. What I believe personally is unity does not necessarily come from uh, becoming uniform. In fact, that suffocates. That's an artificial arrangement. I believe unity comes from acknowledging differences, accepting we are different. इसको तस्लीम कर पाना, मुझे लगता है इससे टॉलरेंस इससे बढ़ती है। जैसे कश्मीर में एक बड़ा सुपरफिशियल डिवीज़न है साउथ और नॉर्थ का, और लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या कहते हैं, जबकि ये उतना कोई बड़ा मसला नहीं है हमारे यहाँ, शुक्र अल्लाह का। इट इज़ नॉट समथिंग दैट वुड लीड टू ए जेनोसाइड फॉर एग्जांपल, बट चलो लेट्स टॉक अबाउट इट। बड़े सारे लोग इसको सॉल्व करते हैं कैसे, कि हम एक ही है। जब आप कहते हैं ना ये हम एक ही है, इससे क्या होता है, इससे आपको कोई एक आइडेंटिटी को फिर एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब हतो और हड़ो बोल सकते हैं कि नहीं, या इसके लिए वर्ड्स जो यूज़ करने हैं वो या ही होगा, क्यों शुक्रान बोलेंगे या क्या शुक्रान बोलेंगे, इसमें से एक अडॉप्ट करना होगा। और वो इनवेरिएबली जो स्ट्रॉन्गर प्रेजेंस जिसकी होगी वही अपनी विल को एनफोर्स कर पाएगा, और इससे द अदर फील सफोकेटेड एंड ही वुड ट्राई टू गेट हिज आइडेंटिटी को वो पुश करेगा, एंड दैट क्रिएट्स फिशर्स विच आर डेंजरस। रादर व्हाट इज ब्यूटीफुल इज कि यू हैव योर लैंग्वेज, आई हैव माइन, टू यू योर लैंग्वेज, टू मी माइन, but we are unanimous in other things. There are things we differ on, and you are forefinger, I am thumb, you are middle finger, I am little finger, you have your own role, I have my own role. You might be eye, I am the ear, you cannot hear but I cannot see. That is what makes us one, that we are here for the same purpose. The purpose makes us one. There is this beautiful metaphor through which you can understand the husband and the wife, they are two different people on two different paths, but if both are looking at the same goal of reaching God, both travel towards God, they would come near to each other as well. Think of yourself and me, we don't know where we exist. आप कहाँ रहते हैं, मैं कहाँ रहता हूँ, maybe poles apart, maybe just adjacent, अगले मोहल्ले में आप सुन रहे हैं मुझे और हमको पता ही नहीं है. Maybe you are in a different continent, you are listening to me in America, there are people who do that. But think about it, if both of us choose to look at the same mountain peak from whichever direction we are looking, and we try to move towards it, our paths would not be same. आपके पास में rivers हैं, जंगल है, मेरे पास में
कोई जंगल नहीं है, सड़क है, किसी और के पास में ग्रास लैंड्स है, किसी और के पास में दलदल है। ये सारे पाथ्स डिफरेंट होंगे और हमारे चैलेंजेस डिफरेंट होंगे, हमारा एक्सप्रेशन डिफरेंट होगा, लेकिन एज वी कीप ऑन मूविंग टुवर्ड्स दैट पीक वी वुड बी कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर. That's how I believe unity has to be understood. It cannot be understood as uniformity, that we are all same looking, we are all similar, but there are bigger ideals that unite us. We are different in छोटे मामलात, but there are bigger मामलात, and the fundamental मामला जिसपे all of us are united is humanity. हम इंसान हैं फाइनली, हम सब अल्लाह ताला की मखलूक है, चाहे फिर हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, अमीर हो, गरीब हो, मर्द हो, औरत हो, छोटा हो, बड़ा हो, जानवर हो, इंसान हो, नॉन लिविंग हो, लिविंग हो. We are all creations of God. That God made this stone, God made me, and in that we are united, we are one. And then we are united in our humanity. God made the Jews, God made the Christians, God made the Muslims, God made the Chinese, God made Japanese. And then we are united in our nationalities, in our religion. We are united sometimes in our language, sometimes in climatic zones. तो ये सारी चीज़ें we have to understand. There is less that divides us. But when there are fissures in the society and there are people who would approach us, and these fissures would sometimes give out different result. Like I gave the example of someone selling an AC, and even though people might be of same religion, AC would make no sense to an Eskimo. He would be like, what is it for? But it would sell good in Arabia, even though both of them would be following the same religion. Now fissures get visible when there is someone approaching. Same is happening in Arabia. The Meccans and the Medinans both, they are trying to woo these people, the Bedouins of Najd. They are trying to call them towards their own group. And in that, the existing fissures within the Bedouins are also getting visible. How? There might be, say for example, a chieftain of a particular tribe, and there would be someone who wanted to challenge his authority, wanted to become the king or chief himself. Now when there are competing powers trying to woo you, trying to make you side with them, then the other might side with the other, and the fissure inside your own tribe would come to forefront. And Leslie Hazelton says the same thing in these words. But this could be a dangerous game, especially when the Meccan-Medinan rivalry served as an excuse to act out power plays within their own tribes, as happened with the Banu Amir. Now, this is a Najdi tribe, a Bedouin tribe living in the Najd, an important tribe. We would come to know about a tribe called Hawazin later. And that would be an amazing battle of Hunan that would take place. I'm not sure if Leslie Hazelton has covered, but she must cover it because it happened before the Prophet sallallahu alaihi wasallam जब उन्होंने ज़ाहिरी दुनिया को छोड़ा, तो उससे पहले वो मामला हुआ, तो होना चाहिए आगे. ये उनके प्रोबेबली उनका सब ट्राइब है, या तो फिर उनके कजिन्स हैं, बनु आमिर. Now what happens is their chief finally pledges his tribe to Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam. Now see, here is a subtle hint of what I was trying to tell you earlier, that for the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, it is not just asking people कि तुम मेरे खेमे में आओ, मेरे साथ allies बनो, मेरे साथ sign करो treaty of defense. No, you would see कि it is actually invitation to Islam. The next line says, who sent 40 men to instruct them in the new faith. That means when the chief accepted the Prophet's invitation, what is the invitation for? Not just mutual defense, it's actually to Islam, and the chief has accepted Islam. The tribe has accepted. That's why the Prophet is sending 40 people to instruct them. Sahih Bukhari mentions, I think, 70 people were sent, but Leslie Hazelton goes with Ibn Ishaq, and she mentions this 40 people were sent. Why would these people be sent? Because the entire tribe has become Muslim. A lot of people need to be trained, and the Prophet sends these people. And there is also this interesting point one needs to understand. Why is she going to side with say Ibn Ishaq and not Sahih Bukhari? Because she is a secular historian,
and she believes that Sahih Bukhari is a later writing as compared to Ibn Ishaq, and that's why this source is more credible. But our usul of credibility are very different. Our usul of credibility are based on the sciences of isnad, sciences of hadith, and because of which we would take Sahih Bukhari to be much more authentic than this. So Banu Amir has now pledged itself to Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam. That for us means that they have accepted Islam. But the chief's nephew has his own mamlat going on. What does he want? He wants an alliance with Mecca, not Medina. And at this moment, what does he find? He gets a chance to discredit his uncle so that he also takes the leadership of the tribe. There would be people who would not want to change their faith. And what he's going to do is he's going to woo them to himself so that he becomes the leader. Now, what he does, he carefully plans and arranges to undermine his uncle. By doing what? He is going to get the neighboring tribe ambush this delegation. जब ये बनु आमिर की तरफ आ रहा होता है ये वफद एक जगह रास्ते में रुके होते हैं, तो ये जो ये नेफ्यू होता है इसके चीफ का, वो क्या करता है? ही अरेंजेस फॉर ए ग्रुप टू एम्बुश दिस डेलीगेशन, एंड इन दिस ही डज इट विद वेरी ब्यूटीफुल प्रेसिजन, जिसमें ही कुड मेंटेन प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी कि मैंने किया या नहीं किया. So that's the kind of act he is going to do, and this plan works well, and they are able to. That's why it is remembered as massacre of Muslims, massacre at Banu Amir, massacre by Banu Amir. So इसमें all the Muslims were killed. That were there except 2, I think. And Leslie Hazelton said the plan might have worked if one believer had not survived. Okay, one survived. Now, why did this one survive? Because he was grazing camels far away. And he would only realize what was happening back by seeing all the vultures and birds flying around. Now, what he does is he goes back to Medina instead of going to Banu Amir with the news of what has happened. Or raste mein he sees 2 Banu Amir tribesmen who were fast asleep. And he thinks, he mistakes them to be one of those who would have killed his own kinsmen. So what he does is he kills the 2 in revenge. Now matters escalate. बनु आमिर के जो चीफ्टन है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और उनको ही होल्ड्स देम लायबल फॉर दिस बिलीवर्स क्राइम. एंड यहाँ से काउंटर आर्ग्यूमेंट है, इवन इफ इट इज़ ऑल ऑफ आवर क्राइम, इट इज़ नॉट ए क्राइम एट ऑल, बिकॉज देयर इज़ ए मिस्टेक और डिलिबरेट एक्ट में फ़र्क होगा. लेकिन फॉर बनु आमिर इट मेड नो डिफरेंस. इवन इफ इट वाज 39 according to Leslie Hazelton, 69 according to other sources, even if that many of the Medinan people were killed, yet for them what matters was the 2 of theirs that were killed. And now Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam, he accepts paying blood money. अब मदीना का जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट था, तो जो मदीना में जितने भी साइनिंग पार्टीज थे उन सबको बुलाया गया कि they are going to contribute their fair share in this. And Banu Nadir was to pay more because they had a special long-standing alliance with Banu Amir. Now, Banu Nadir kaur hai? This is one of the 2 remaining Jewish tribes. The Kainuka you would know. The Kainuka had been expelled from Medina. And there are 2 more tribes that remain. What are the 2? Banu Nadir and Banu Quraiza. Now, Banu Nadir is here that we are going to discuss. Now, they are being asked to pay more, but they do not see things like that. They consider themselves no more responsible than anyone else. कि ये हमारी कोई स्पेशल गलती नहीं है as compared to others. Now, Leslie Hazelton says, so Ibn Ishaq reports that while they politely welcomed Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam when he went to negotiate the matter with them at their Sabbath council meeting, and he took with him Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar,
बट बनु नादिर हैड समथिंग एल्स इन माइंड ड्यूरिंग दिस मीटिंग। क्या होता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ग्रुप के साथ वहाँ जाते हैं, अपनी वफ़द के साथ, हज़रत उमर के साथ, हज़रत अबू बकर के साथ, लेकिन बनु नादिर ने कुछ और प्लान किया है। तो इब्न इसहाक कहते हैं कि जब वहाँ वो गए, एंड देयर प्लान वाज टू असैसिनेट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दे वांट टू किल हिम इंस्टेड ऑफ पेइंग हिम। एंड हमारे यहाँ द स्टोरी गोज दैट ही वाज इन्फॉर्म्ड बाय हज़रत जिब्रील कि व्हाट आर दे प्लानिंग, यू लीव द प्लेस। एंड लेज़ली हेजल्टन सेज कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, बिकॉज इट ऑल डजंट मेक सेंस। तो लेज़ली हेजल्टन सेज कि जैसे ये सारी स्टोरीज हैं, ये भी एक बड़ी स्ट्रेंज स्टोरी है। द प्लान वाज टू ड्रॉप ए लार्ज बोल्डर फ्रॉम द टॉप ऑफ द वॉल और एंड मेक इट अपीयर लाइक एन एक्सीडेंट। अब आर्ग्यूमेंट क्या है लेज़ली हेजल्टन का, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आर्ग्यूमेंट ये है कि इतना बड़ा पत्थर ऊपर कैसे ले जाते, इतना बड़ा पत्थर ऑलरेडी ऊपर हो सकता था। हाउ वुड वी नो? We just have to look at what are the defense mechanisms of people in this era. Was it unheard of keeping big boulder blocks in the top of forts? No, that was not unheard of. ऐसा ही होता था। ऐसा ही होता था। ये कोई अनहर्ड ऑफ बात नहीं है। देखिए, रिपोर्ट्स हैं हमारे पास। रिपोर्ट में बात सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, उससे मुझे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यह है कि आप किस बलबूते पे बात को रिजेक्ट कर रहे हो। कि अभी ये आगे बोलेंगे कि इतना बड़ा पत्थर ऊपर लिया कैसे। इतना बड़ा पत्थर ऊपर ऑलरेडी मौजूद है, और वो क्यों है ऊपर? देखिए, सिंपली बस रखा हुआ है, रीज़न एनफ है। तो क्यों है ऊपर? आप अपने घरों के ऊपर वाले फ्लोर पे जाइए, वहाँ पे बड़ी सारी चीज़ें होंगी जिस पे आप पूछिए ये रखा क्यों है यहाँ पे, एंड देयर वुड बी नो एक्सप्लेनेशन। जस्ट बिकॉज देयर इज नो एक्सप्लेनेशन डजंट मीन द थिंग इज नॉट देयर। मतलब मेरे ही टेबल को जब मेरे सामने देखेंगे कि इस पे चीज़ें इतनी रखी हुई है, रखी क्यों है? इसमें 10 चीज़ों की एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये यहाँ पे क्यों है। इसका मतलब ये नहीं है कि 10 साल बाद कोई आर्ग्यू करेगा नहीं इस टेबल पे नहीं है ये चीज़। जैसे इफ़ वी क्लिक अ फोटो ऑफ माई टेबल राइट नाउ, देयर इज अ मेडिसिन हियर, मेडिसिन का कवर है। एक छोटा सा ब्रश है, ये छोटा सा एक ब्रश है जो एक किट से निकला है, यहीं पे रखा हुआ है। तो अब ये फोटो को देखकर 10 साल बाद कोई आर्ग्यू करे ये ब्रश रखा ही क्यों होगा वहाँ पे? ये ब्रश शायद किसी इलेक्ट्रॉनिक किट को साफ करने के लिए, मे बी से फॉर एग्जांपल ट्रिमर को साफ करने के लिए, बट ट्रिमर के लिए तो अलग रखा है, कबर्ड कहीं पे है, कहीं जगह है, कोई वार्डरोब है, उसमें रखा होता है। तो यहाँ पे क्यों है? ये तो एक एआई क्रिएटेड इमेज है। नहीं, वी माइट नॉट हैव एन एक्सप्लेनेशन डजंट मीन कि द थिंग डिड नॉट हैपन, एंड प्रोबेबली ऐसा भी हो सकता है कि इट डिड नॉट हैपन। आई एम सेइंग व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर दैट व्हिच थ्रू व्हिच यू आर रिजेक्टिंग इट। जस्ट बिकॉज मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। हमारे पास रिवायत ये आई है कि पत्थर रखा था ऊपर, ख़त्म बात, रखा था। कोई रीज़न नहीं है इसको रिजेक्ट करने का। क्या पत्थर ऊपर रखा नहीं जा सकता? क्या फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी है पत्थर ऊपर रखने की? कोई फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। देयर इज़ नो गुड रीज़न टू डिनाई दैट देयर वाज अ रॉक देयर। एंड देन आई टोल्ड यू कि व्हाई वुड पीपल प्लेस सच रॉक्स एट सच हाइट? इट वाज अ डिफेंस मैकेनिज्म दैट वाज प्रैक्टिस थ्रू आउट दैट एरा, थ्रू आउट वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन अरेबिया। बड़े पत्थर को फोर्ट के एंट्रेंसेस पे रखते थे, क्योंकि कभी भी कहीं भी कैसे भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती थी। And what they want to do with it is now they want to push it to kill the guest that has arrived. But how was it foiled at the last moment? The Prophet sallallahu alaihi wasallam simply stands up and walks away and doesn't come back. And how do we explain it? We explain it कि हज़रत जिब्रील उनके पास आए और उनसे कहा कि ऐसे they are planning to kill you, you just leave this place. And he leaves. लेज़ली हेजल्टन कहती है फरिश्ता हो या ना हो, every detail makes it an unlikely scenario. क्यों है ये अनलाइकली सिनारियो? सुनिए अब एक्सप्लेनेशन। द काउंसिल मीटिंग ऑन द सबत पे काउंसिल मीटिंग हो ही नहीं सकती थी। वंस अगेन क्यों नहीं हो सकती थी?
क्यों नहीं हो सकती थी? So there is no reason कि क्यों नहीं हो सकती थी. Just because there is a history of not having council meetings on Sabbath doesn't mean कि it did not take place on Sabbath on that day. Next, Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam departure without Abu Bakr and Umar. Hazrat Umar और Hazrat Abu Bakr उनको छोड़ के वो वहाँ से निकले, presumably leaving them in danger. No, he's not leaving them in danger at all. It's very unlikely that the two would be pursued. The little logistical matter of exactly how a heavy boulder could be brought to the top of the wall. These heavy boulders are not as heavy as what is placed on the top of pyramids of Egypt. So it is still humanly possible to take the boulders up. इस छोटी सी हाइट पे कोई बड़ा मसला नहीं है. Humans have done it much. Humans have done much bigger feats than this, and much earlier than this. And then how would they have dropped it with such fatal precision? By making the person sit there. ये सारे प्रेसिजन्स को कर पाना कोई बड़ा मामला नहीं है. जैसे आपने प्लान किया हो, जब आपने प्लान किया होगा इन चीज़ों का, आप यू कैन मेक, चेयर को एक ऐसी जगह रखना है जहाँ पे कोई बैठेगा और वो तीर अंदाज के निशाने पे रहे. ये कोई बड़ी बातें नहीं है कि ये हो सकती हैं. तो ये स्टोरी मुसलमानों ने बनाई क्यों, फैब्रिकेट क्यों की? लेज़ली हेजल्टन का कहना है कि जो बनु नादिर के साथ हुआ वो अदरवाइज फिर जस्टिफाई नहीं हो सकता था. तो इसीलिए लेटर मुस्लिम्स जस्ट concocted दिस मैसेज. बट व्हाट शी फेल्स टू एक्सप्लेन वंस अगेन इज हाउ डिड द मुस्लिम्स एट दैट टाइम एक्सेप्ट इट. What she has to then say is that Nauzubillah, not just the Prophet, it is the entire Medinan population who has kind of become hypocritical. Notice it is not a matter of nationality that you might say they had bigger reasons. It is the matter of belief. Belief is a different thing altogether. Belief is altogether a different thing. People lose belief in such matters because they are fighting on it. They would easily give up on it if they would realize, oh, this is all fake. मजहबी तहरीकों के चलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसकी सेंट्रल फिगर का कैरेक्टर. The moment people see reasons to doubt in it, they would leave it immediately. How many godmen have been left in cold by their followers by looking at their character once things came out about their character? Big godmen yesterday and nobody today. Because matters like this, कश्मीरी में हम कहते हैं, उर्दू में कहते हैं, हसास मामले हैं. यहाँ पे गुंजाइश नहीं होती फॉल्टरिंग की. If the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was visibly a person who was kind of finding faults to settle scores with people, people would not be ready to die for that cause so easily, and more so when it is not a cause they are born with. It is a cause they have willingly chosen for themselves. So whatever the matters, the story goes like this. In some time, a message was sent to Banu Nadir: leave the city and live with me no longer after the treason you have plotted against me. And the question is, do they deny it? They don't deny it at all. They don't deny having done it. Leslie Hazelton has a very interesting point to make. She says the language has changed. He does not say this city. He does not say Yasrib. He says my city. The treason is not against the charter. The treason is not against Medina. The treason is against me. This shows absolute authority. How do we look at it? We accept this. Yes, that's what has happened. Because, like we said, whenever a messenger comes from God, this is what happens. जब ये Hazrat Nuh आए, after some time the people who did not accept him, एक तूफान आया, वो सब बाहर. Hazrat Lut आए, the people who did not accept him, what was done to them? एक तूफान आया और सब खत्म. ऐसी डिफरेंट ट्राइब्स के साथ ये हुआ है ह्यूमन हिस्ट्री में. जिन्होंने बात नहीं मानी
उनके साथ यही हुआ, तबाह बर्बाद हुए। हिंदुस्तान में भी ऐसा ही हुआ, चीन में भी ऐसा ही हुआ, पूरी दुनिया में ऐसा ही हुआ। ये इसको कहते हैं बुरे और अच्छे की लड़ाई में हमेशा बुरे को अच्छे को फतह मिली है और बुरा तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया है। रावण से भी कहा गया था कि कम तो हमारे साथ आपका कोई ऐसा ये नहीं है, डू रेस्टोर द रॉन्ग दैट यू हैव कमिटेड, बट ही डज नॉट लिसन and he is punished for it severely. The Kauravas do not listen, and they also face the brand. They people of Sodom and Gomorrah do not listen, and they face the brand. Pharaoh of Egypt does not listen. Pharaoh of Egypt does not listen. He faces the brunt. The people of Hazrat Shuaib do not listen. They face it. Uh, the people of Hazrat Saleh do not listen. They face it. And that has been the sunnah of God, that wherever a messenger comes and people do not listen, they have to face the wrath of God. And sometimes it is in through the hands of the believers that they face this wrath. And in this case, that's what is going to happen. The ultimatum was delivered by a person who was Banu Nadir's own, a confederate to them. And that once again tells us that the matters were as they were said. कि उनके अपने ने ही ये मैसेज उनको डिलीवर किया, जो हमारे लिए ये क्लियर कर देता है कि नहीं, बात वही है जो उनको एक्यूज़ किया गया है। तो when the Banu Nadir inquired from their own, why are you the one, matlab you too Brutus, that you two are going to side with him? So he responds with a chilling announcement: the hearts have changed. Islam has wiped out the old alliances. This is the new alliance that unites us. Now the Banu Nadir, they sit together and they discuss what is to be done. What can we do to avoid this expulsion? And in comes the same Ibn Ubay, the hypocrite, the leader of hypocrites. He says to them, resist. Resist करो, नहीं निकलना, बनु कैनुका की तरह नहीं निकलना। मेरे पास 2000 लोग और हैं. We can wage a war and stay here. We will fight together. We will fight alongside you. And Banu Qurayza is also with us. We'll fight together and we would finish this once for all. Now, Banu Qurayza was not part of it. Banu Qurayza did not even know what was going to happen. Banu Qurayza has no discussions with anyone on these matters. So, they had made no such commitment. But Banu Nadir does not know this, कि कोई ally actually है नहीं. They have no clue about it. But they rely on Ibn Ubay's word. And now what they are going to do, they are also going to retreat to their stronghold. They are going to sit there and kind of build up a defense. At the same time, their own elders are warning them कि no, we shouldn't do that. Why? क्योंकि अगर हम ये करेंगे और हम फेल हुए, then we are going to face worse. What was the worse? The worst was not what they were facing right now. What were they facing right now? Expulsion. If they would wage a war and if they lose, their wealth would be seized, their women and children would be enslaved, and their fighting men would be killed. This is what was going to happen to them, and they knew it. What does the Prophet ﷺ do? He makes a very different move. He gives an order to cut the trees. Banu Nadir ki jo palm grooves hai, they are asked to be cut. Now that's a very big thing to do, because these are your treasures. ये कोई और पेड़ नहीं है. And more so, these are date palms. They are generations of work. After careful tending and careful work on these, this is not just property of people, this is their history.
A tree planted by great grandfather, nurtured by great grandfather, then again by grandfather, and could have fallen ill someday and then taken care of by father. And now you. This is history. But cutting them sent a message. There was nothing to defend now. Banu Nadir had nothing to stay for. What was there to stay for? The wealth was gone. And it was also a message that what was awaiting them if they chose to resist further. And yet again, it sends a message to Ibn Ubay that you are not the one who is in control now. And this siege, it turns out to be the repeat telecast of the Banu Kainuka siege. 15 दिन हो जाते हैं, they are left with no water, no food, and Ibn Ubay's 2,000 men, they never come. Banu Qurayza also never comes to support. There is nothing for Banu Nadir to do. They capitulated in such a moment. And they were still forgiven, and they would leave with 1 camel load per 3 people. That's what they were allowed to leave with. But Banu Nadir is a very proud tribe. It's not like the earlier one. It doesn't leave like others. It makes great pomp and show while it leaves. It leaves with the triumphant parade. ये ड्रम बजाएंगे, ये गाएंगे. They would dress in their finest clothes. They would wear jewelry. और रिवायतों में आता है कि a witness, a sahabi puts up it like this: they went with a splendor and glory the like of which was never seen from any tribe at that time. So they put it up a defiant show. So there was this impressive display of protest, a defiant statement by Nadir that they were the ones who should be proud. The rest of Medina should feel ashamed. Why? Because they chose to fight. They did not simply capitulate. Now, where do they go? They also go to the same Khyber. Which Khyber? The Khyber where Banu Kainuka went, and the Khyber which would be in a war later with Muslims. So they head towards the oasis of Khyber, and some of them scatter into Palestine and Syria. Now, this matter is also discussed in Quran. Quran voice quickly came into play to counter the shocking image of believers destroying date orchards. What does the Quran say? Whatever you believers have done to their trees, whether cutting them down or uprooting them, was done by God's leave, so that he might disgrace those who defied him. तो ये अल्लाह ताला का हुक्म था जो मुसलमानों ने किया उस टाइम. This was the fault not of the believers, but of the men like Ibn Ubay. क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, कंसिडर द हिपोक्रेट्स. जो अपने फेलोज से क्या कहते हैं? फेलोज कौन है हिपोक्रेट्स के? द फेथलेस अमंग पीपल ऑफ बुक. दैट मीन्स बोथ ऑफ दीज आर हिपोक्रेट्स एक्चुअली. We would never listen to anyone who sought to harm you, and if you were attacked, we shall certainly come to your aid. ये इब्न उबय ने कहा था किससे? बनु नादिर से. But God bears a witness that they are liars. कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं ऐसा आएंगे एड वेड के लिए. तो जब बनु नादिर को एक्सपेल किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम made it clear that there was no one who was going to challenge the authority of God and his messenger. He made it clear that he and his followers would succeed. And this is what had been already promised. One has to look at these statements in context, because many times many critics of Islam have pointed out that the Prophet changed once he got authority. That he was in the Meccan part, to you your religion, to me mine. La ikraha fid din. He was like, there is no compulsion in religion. But what they miss simultaneously is that it is within the Meccan part also, that this was also predicted. And the Meccans would make fun of the Prophet ﷺ. And they would say, why is this ship not catching the shore? Which ship? Where the Prophet had promised them that there is going to be a calamity which is going to befall you all if you reject the messenger of God. And what was that message? Leave zero ala deen kulle.
Walau karihal kafirun, walau karihal mushrikun. Okay, never mind how much the disbelievers dislike it. Never mind how much the mushrik, the people of shirk, dislike it. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. This is going to triumph all other isms, and you would see it. And وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. And enough is God a witness to it. कि ये होगा. आपको ऐसा लग रहा है कि आफ्टर 13 years he has got 200 followers, 100 followers, and you would say कि ऐसा कभी नहीं होगा. No, ये होगा. कब होगा, कैसे होगा, that would open. These are the times you have to look at it from this prism, इस context में. When the Prophet ﷺ said to his followers, there would come a time when you would have 2 to 3 meals a day. And his Sahabis would say, would that really be a time? They were shocked. They would not have 1 meal a day. They would pass days altogether without having any food, and the Prophet is telling them there would come a time you would have 2 or 3 meals a day. The Prophet ﷺ catches hold of a guy and tells him that you are going to wear Khosrow's these anklets and bracelets and his clothes. People would laugh at that statement. It's like telling someone in Kashmir that you are one day going to become president of America. People are going to laugh. So think of me telling Joseph, you are going to sit in White House president's chamber in the president's seat, not on the other side. Everyone is going to laugh. How on earth? But that's what the Prophet promises the person. And this happens. And he was called during the caliphate of Hazrat Umar. He was called because at that time they had done it. And he was given all of those because the Sahaba had heard the Prophet say it. And he was given those bracelets, etc. And he wore them. So the point being, these are to be looked in that context. These are not secular wars. These are divine matters settled by the messenger of God. And these are evidences of his prophethood. And now Ibn Ubay would once again have known his place. Now, for the believers, this is not enough. Hazrat Umar urges Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam that this Ibn Ubay is going too far ahead. Why don't you order to kill him? And the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam says, what? Kya keh rahe hain, Hazrat Umar? What are you telling me? Are you going to make people say that I am one who kills his own companions? What a beautiful thing to say. Now, Lazy Hazelton has to give it secular color once again. And she is going to say the Prophet was very intelligent. Why to make a martyr out of Ibn Ubay? You can keep him close and choose to subordinate him every time. और 5-6 साल बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम comes back to this topic. और फिर हज़रत उमर से एक बार कहते हैं, अब क्या लगता है आपको, should I have killed him that day? तो हज़रत उमर फरमाते हैं कि by God, if I had ordered Ibn Ubay killed when you advised it, the chiefs of Medina would have been shaking with fury. But by now, if I commanded them directly to kill him, they would do it. कि हालात ऐसे बदल गए कि हज़रत उमर कहते हैं कि अगर उस वक़्त हमने ऐसा कुछ किया होता, एवरीवन वुड हैव बीन आवर एनिमी. और अब अगर इसके खुद के लोगों को भी कहें कि किल हिम, दे आल्सो नो कि व्हाट इज़ ही, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज़ ही, हाउ डेंजरस इज़ ही फॉर ऑल ऑफ अस, एंड दे हैव ऑल टर्न्ड to our side. Now, about the matter of expulsion of Banu Nadir, Quran once again talks about it. It had previously maintained, the Quran had maintained that a small number of Jews were creating opposition to Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam. But now it is saying there are a small number of good Jews among them that are left. Verse after verse, Quran would become stronger and stronger in its polemic against them. Now it would call them clearly evildoers. And then it says, it was God who drove the unbelievers among the people of book out of their dwellings. They imagined that their strongholds would protect them. But God's scourge fell upon them. If God had not decreed expulsion for them, He would surely have punished them in this world.
अगर इनके लिए अल्लाह ताला का कानून ये ना होता कि इनको एक्सपल्शन करो इनका यहाँ से, तो इनको इससे भी बुरी सज़ा दी जा सकती थी. But none of this boded well for the last remaining Jewish tribe, Banu Qurayza. What happens to Banu Qurayza and what are the matters that lead to the incident of Banu Qurayza? We would look at into in the next session, inshallah.